So today we'll talk of the same topic, Hansel and Gretel by Bruno Bettelheim. So in what way he has interpreted the same story, Hansel and Gretel, है Hansel and Gretel लाई अब ब्रुनो बेटलहेमले कुन रूपमा इन्टरप्रेट गरेको छ हामीले त्यो हेर्ने हो है त. So here this is, if you may have your exercise book and pen, you will list out, okay, write down. यहाँ हामीले के गर्छौं भने this Bruno Bettelheim has interpreted this story from psychological point of view. Okay, from psychological point of view, remember. So psychology means तिमीलाई थाहा छ psychology भनेको मनोविज्ञान हो हैन. अब मनोविज्ञानको दृष्टिकोणले के गरिएको छ भने स्टोरीलाई इन्टरप्रेट गरिएको छ. So how has he interpreted? We'll just see that. Okay, so here to understand this story from psychological point of view, yeah, you have to know something about Freudian interpretation, Freudian theorem, है. Freudian theory को बारेमा अलिकति जान्नु पर्छ है. So Freudian theory मा जस्तै ईड भयो, ईगो भयो, सुपर ईगो भयो, यस, त्यसको बारेमा अलिकति you have to know. Okay, so Freudian theory को बारेमा अलिकति एउटा सानो तिमीहरुलाई यो भिडियो देखाउँछु है. Okay, यो भिडियो देखाउँछु. What you do, just watch the video and just try to understand what id and ego and super ego. ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब तुरंत आ साउंड सुनिन्छ. समझे. फिर इसमें अगर मैं बात करूं तो प्लेजर प्रिंसिपल, साउंड सुनिया. प्लेजर प्रिंसिपल पूरी होनी चाहिए. तो वो एक चीज हुई. यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी पूरी तरह, समझे. फिर इसमें अगर मैं की बात करूं तो ये टोटली क्या है, एक तो अनकॉन्शियस है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, टोटली इंस्टेंट कब आती है, सुपर ईगो कब, पर्सनालिटी होगी. करूं तो इद है पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व के 3 एस्पेक्ट से कैसे जुड़ी हुई हैं फ्रॉइड के हिसाब से. इद क्या है, तो इद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इद क्या है, टोटली आपका अनकॉन्शियस का पार्ट है, मतलब अचेतन मन का पार्ट है. जो इद की पर्सनालिटी होगी पूरी तरह से अनकॉन्शियस लेवल पर काम करेगी. किस एज में डेवलप होता है, ईगो कब आती है, सुपर ईगो कब आती है, इन सबको भी समझेंगे. तो अगर मैं देखूं इद की बात करूं तो ये टोटली क्या है, एक तो अनकॉन्शियस है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, टोटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब तुरंत आराम, समझे. फिर इसमें अगर मैं बात करूं तो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है. प्लेजर प्रिंसिपल मतलब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए. तो वो एक चीज हुई. यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, पूरी तरह से अनकॉन्शियस का पार्ट है. दमित इच्छाओं का भंडार गृह इसको कहते हैं, मतलब स्टोर हाउस ऑफ जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उनका. और क्या चीज है यहाँ पर, लिबिडो. आपने सुना होगा फ्रॉइड के बारे में, तो लिबिडो की बात की है फ्रॉइड ने, जिसको सेक्सुअल अर्ज या फिर जो एक ऐसी एनर्जी जो सब जगह काम कर रही है उससे जोड़ा जा सकता है, जो आपके हर एक एक्ट में है कहीं ना कहीं, या जो आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करती है. तो लिबिडो भी क्या है, यहीं पर है. और ये लिबिडो के अंदर फिर एक और 2 तरह की एनर्जी आ जाती है, लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा आपका डेथ इंस्टिंक्ट. लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब इरोस कहते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट मतलब थैनेटोस कहते हैं. तो वो भी क्या है, यहीं से शुरुआत हो चुकी है. लाइफ इंस्टिंक्ट या इरोस वो हैं जो आपको सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ाते हैं, ड्राइव करते हैं. और थैनेटोस मतलब डेथ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर वो होते हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं. चाहे वो आपका जो डिप्रेशन है वो हो सकता है, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ये सारी चीजें हैं. तो ये कहां पर आ गई, इद में आ गई. इद कब से है, जब से आप जन्म लेते हैं. बिल्कुल प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करना आप स्टार्ट करते हैं. एक न्यू बॉर्न बेबी है अगर, तो वो पैदा होता है, उसको दूध चाहिए और सारी चीजें चाहिए, और उसके बाद क्या है, उसको प्लेजर सीकिंग है. मतलब तो ये कहां से शुरू होता है, अगर बात करें तो जो वो ब्रेस्ट फीडिंग है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है. तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें. फिर अगर हम बात करें ईगो की, तो ईगो की बात करें तो ईगो क्या है, ये टोटली अनकॉन्शियस का पार्ट था. इसको इससे जोड़ सकते हैं, टोटली अनकॉन्शियस का पार्ट था. ईगो मतलब अहम, आपकी सेल्फ की क्या अवेयरनेस, आप सेल्फ को क्या लेके चलते हैं, खुद को क्या मान के चलते हैं. तो ईगो में क्या है, ये क्या है, एक तरह से कॉन्शियस है, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, बट फिर भी इसको हम कॉन्शियस मान के चलते हैं. कॉन्शियस है मतलब चेतन है. तो कॉन्शियस स्टेट है. यहाँ पर क्या है, ये एक पुलिसमैन का काम करता है या एक रेफरी का काम करता है. मतलब ये दोनों क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं. एक्सट्रीमिस्ट मतलब बिल्कुल ऐसे किनारों पे, यही करेंगे या यही करेंगे, लेकिन बीच का काम करता है आपका ईगो, रेफरी का काम करता है. ये दोनों लड़ने को तैयार हैं तो ये बीच में रेफरी का काम कर रहा है, एक पुलिसमैन का काम कर रहा है, और सही चीज के लिए कोशिश कर रहा है कि उसको आगे बढ़ाया जाए. तो कॉन्शियस क्या है बेसिकली, मतलब कि चेतन मन. अब यहां पर अगर बात करें तो ईगो में और क्या होगा, तो भाई जो आपका ईगो है वो आपको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है और बचा रहा है किससे,
बिल्कुल ईद पे अगर आप जाएंगे तब भी आपको नुकसान हो सकता है, सुपर ईगो पे बिल्कुल चलेंगे तब भी नुकसान होगा। समझते हैं सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आपका क्या है? मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मोरालिटी प्रिंसिपल मतलब कि भाई जो सही है वो सही है वैल्यूज के हिसाब से, या फिर आपकी जो भी समाज से आपको वैल्यूज मिले हैं, मॉरल्स मिले हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर चलेगा ये हमेशा, नैतिक मूल्यों पर। मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कॉन्शियस मतलब रियलिटी से जुड़ा हुआ, तो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है पूरी तरह से। और इसमें अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल लेने की, तो भाई हो सकता है कि आपके पास एक लंबरगिनी हो और उसमें क्या है, आपको मान लीजिए कि वो 500 की स्पीड पे जा सकती है, तो ईद क्या कहेगा, भाई 500 की स्पीड पे ही दौड़ाएंगे इसको, क्योंकि 500 की स्पीड पे जा सकती है, चलो टेस्ट करते हैं। लेकिन ईगो क्या है? ईगो सोचेगा, ईगो के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ईद मतलब पूरे 500 की स्पीड पर। सुपर ईगो मतलब, सुपर ईगो क्या कहेगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं, इससे तो मौत हो सकती है, ये तो गलत है, इतनी ज्यादा हाई स्पीड या ये सारी चीजें। लेकिन ईगो बीच का रास्ता निकालेगा कि भाई रुको, दोनों बीच का रास्ता निकालते हैं, कुछ ऐसी रोड पे लेके जाते हैं जहां खाली हो, या फिर इसको प्रॉपर गियर के साथ चलाते हैं, प्रॉपर जो सिक्योरिटी है, सीट बेल्ट है, उन सबके ध्यान में रख करके चलाते हैं। तो कुछ बीच बीच का रास्ता जिससे ये भी सेटिस्फाइड हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, तो ये ईगो है। और इसका अगर एग्जाम्पल लें तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा चलता है, जो हमने शुरुआत की थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या है, ईद में है, ईद पर्सनैलिटी है जन्म से ही। ठीक, जन्म से, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जन्म से क्या है, ईद पर्सनैलिटी है। लगभग 3 वर्ष की अवस्था में आपका ईगो डेवलप होने लगता है, और फिर लगभग 5 वर्ष की अवस्था में आपका सुपर ईगो। तो ये बात ध्यान में रखने की है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक और एग्जाम्पल की, तो जो बच्चे ने जन्म लिया वो क्या है, इन्फेंट क्या है, एक ईद की पर्सनैलिटी का काम कर रहा है। अगर इसकी बात करें ईगो की, तो इसको 3 वर्ष का बच्चा या कह लेते हैं, इसको 3, 4, 5, 6 वर्ष का बच्चा मान लेते हैं। और इसकी बात करें सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो एक बूढ़ा बड़ा आदमी है जो सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। ये कोई जवान हो सकता है ईगो वाला, या कोई मीडियरी पर्सन हो सकता है जो मैनेज कर लेता हो। तो यहाँ पर क्या है, जो जन्म लिया है जिसने, जो ईद प्रिंसिपल पर है, वो तो उसको जो करना है वो वही करेगा। लेकिन ये क्या करेगा सुपर ईगो वाला, ये मॉरल प्रिंसिपल्स को देखेगा कि भाई प्रिंसिपल्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, जो समाज ने रूल्स बनाए हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं उन पर चलूंगा। तीसरी एक चीज फिर आती है ईगो, भाई दोनों को बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, जैसे आप जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है, आपको गोले भरने हैं और आपको कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, मान लीजिए 50 क्वेश्चन नहीं आते 150 में से। अब आपको बिल्कुल ही नहीं आते, या हो सकता है 100 में से ना आते हो, मतलब स्थिति ऐसी है कि अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आप पास होने वाले नहीं हैं, और वैसे भी पास होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब आपके पास क्या चांसेस हैं, ईद कहेगा कि भाई सारे गोले भर दो, कम से कम जो होगा देखा जाएगा। यहां पर सुपर ईगो कहेगा कि क्या जरूरत है, मतलब क्यों भरने हैं जब तुम्हें आता ही नहीं है तो। ठीक, लेकिन ईगो क्या कहेगा, भाई गोले भरो, लेकिन कैसे, एलिमिनेट करके भरो, जो तुम्हें बेस्ट, जिसमें बुद्धि लगा करके थोड़ी हटा सकते हो उनको भरो, एबीसीडी मत भर दो। तो वो एक बात हुई। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो इस तरह से काम करते हैं। आपको जो आपका ईद है वो एक तरह से ये कह सकते हैं बिल्कुल सेक्सुअल अर्ज, या फिर जो अग्रेसिव अर्जेस हैं, जो बिल्कुल आपकी दमित इच्छाएं हैं, अनकॉन्शियस में जो पड़ी हुई हैं, प्लेजर है, उसकी तरफ लेकर के जाता है कि मजा आना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी नुकसान पहुंच जाए। लेकिन ईगो क्या है, कहता है भाई आपकी ये वाली इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, और जो सुपर ईगो है, जो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही रहें, ठीक ठाक काम कर जाएं। सुपर ईगो क्या करता है भाई, सिर्फ और सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको कहीं पे आप चाय पीने गए। अब क्या हुआ, आपने चाय पी और आप भूल गए कि उसको कुछ अमाउंट देना था, उस चाय का प्राइस देना था। तो आपने क्या किया, आप निकले वहां से, और आपको निकलते ही याद आया, जैसे ही आप 4 कदम गए, कि भाई मैंने इसके पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ हामीले हेऱ्यौं कि इगो, सुपर इगो एन्ड ईद, यस, त्यो के हो भनेर है। सो सिगमन्ड फ्रोइड को के हो, सिगमन्ड फ्रोइडको थ्योरीबाट लिएको छ ईद, इगो एन्ड सुपर इगो, एज वी डिस्कस्ड है। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौं कि भिडियोमा ईद भनेको के प्लेजरको लागि गरिन्छ, यस, एन्ड इगो भने जस्ट ब्यालेन्स गरिन्छ, अनि सुपर इगो भनेको हामीले नैतिक मूल्य मान्यतासँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ है। हामीले यो गर्दाखेरि समाजले के भन्छ, कसो भन्छ। सो दिस 3 थिङ्स, यस, विल टक अफ। उसले अलिकति भिडियोमा एउटा इगो बारेमा कन्सियस भनेपछि त्यो वास्तवमा सब कन्सियस पनि हुन्छ, यस अर नो, सब कन्सियस टाइपको। So these are some of the difficult words as used in this composition है। यो कम्पोजिसनमा प्रयोगहरू भएको छ। यो शब्दहरू एकचोटि यहाँ जानौँ। सो predicament means sufferings, okay, predicament means sufferings or difficulties,
Gratification means satisfaction. Debilitate means became weak due to hunger. भोकले चाहिँ जब कमजोर भइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी debilitate भन्छौँ. Regression, this word you have to remember. Yes, quite often है. हामीले यो रिग्रेसन भनेको के हुन्छ भने कुनै कुरा हामी पछाडीतिर फर्किनु है, एक्ट अफ टर्निङ, पुराना कुरालाई ल्याउनु, that is regression. And one more word is cannibalistic. Cannibalistic भनेको मान्छेलाई मारेर खानुलाई के भनिन्छ, cannibalistic भनिन्छ. जस्तै witch को कुरा गर्दाखेरि we'll talk of the witch. Yes, she loves eating humans' meat, so she is a cannibal. Okay, she has the nature of cannibalistic, or that situation shows cannibalism. We have to think of. And voraciousness means eating habit. यो जुन खाने habit हुन्छ त्यो चाहिँ भयो. Then subservience means the state of being servant. And oedipal, you are given here oedipal means related to motherhood है, मातृत्वसँग related कुराहरू. So the words जस्तै regression भयो, you will remember regression. Similarly, debilitate or cannibalistic or oedipal, these are some of the words, yes, you have to remember. Okay, so हामीले from psychological point of view, basing on id, ego and superego, how Bruno Bettelheim has interpreted this story. Let's see. Okay, when you see जस्तै मैले यहाँ child को राखेको छु यहाँ, mother and mother is breastfeeding her child, yes or no? So यसबाट के हुन सक्छ भने बच्चाको साइकोलोजीले के बच्चाको बिहेभियर कस्तो थियो, आमा कस्तो थियो, देन फादर कस्तो थियो, विच को कस्तो थियो, and how do such behaviors reflect actually, how do such behaviors are reflected in this story. Yes, त्यसरी दिमागको या मेन्टल कन्डिसनको अध्ययन गरेर यहाँ ब्रुनो बेटलहमले इन्टरप्रेट गरेको छ. सो तिमीहरूले कपी यस्तो रेडी पारेर राख्नु है. लेट्स सी. फर्स्ट पोइन्ट, when you talk of, see, यसमा के भनेको छ भने poverty and deprivation make a man more selfish. मान्छेमा जब गरिबी हुन्छ, डिप्रिभेसन भनेको केही कुरा नपाउने हुन्छ, त्यस बेला के हुन्छ, मान्छेहरूलाई सेल्फिश बनाइदिन्छ अरे. Yes, and because of that selfishness, he or she comes to be very less sensitive to the suffering of others. Yes, and commit evil deeds. के भन्छ भने ब्रुनोले कि जब गरिबी हुन्छ, एउटा डिप्रिभेसन हुन्छ, कुनै कुरा हामीले पाएका हुँदैनौँ, त्यो पाएनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के हुन्छ, एकदम स्वार्थी हुन्छौँ रे. जस्ट लाइक when you talk of this one, think of the woodcutter family है. woodcutter family के हुन्छ, गरिब हुन्छ हैन, उसँग खाने कुरा पनि हुँदैन, नभएपछि के हुन्छ, उ बच्चाको बारेमा के हुन्छ, लेस सेन्सिटिभ हुन्छ के, अनि त्यसले गर्दा नराम्रो काम गरिदिन्छ, कमिट एभिल डिड्स, यसरी नराम्रो काम गरिदिन्छ, त्यो बच्चाहरूलाई जंगलमा छोडिदिन्छ. Yes, so this is one concept, psychological concept, that when a person is poor and he or she doesn't have enough thing to survive his or her life, at the time he comes to do some mistakes, so he comes to commit any evil deeds, any wrong works है भने पहिलो पोइन्टमा चाहिँ यसरी भयो. नेक्स्ट पोइन्ट, the child dominant anxiety means worries. Okay, worries, चिन्ता हैन. चाइल्डमा एउटा बच्चामा के हुन्छ, के चिन्ता भित्र भइरहेको हुन्छ कि he will be or she will be rejected or left somewhere, yes or no, by someone or by parents है. बच्चामा एउटा भित्रतिर त्यो डर एउटा महसुस भइरहेको हुन्छ, उसको आमा बुवाले कतै छोड्दिने हो कि हैन. So the child dominant anxiety is rejection and desertion, which he experiences in the form of the fear of starvation. Yes or no? जुन भोक लाग्या हुन्छ उलाई हैन, भोकले मर्ने अवस्था जस्तो हुन्छ. When you think of Hansel at first, Hansel लाई के हुन्छ भने वा Hansel वा Gretel लाई दुवैजनालाई आमा बुवाले छोड्दिनु हुन्छ कि जस्तो. Yes, they have the feeling. So desertion भनेको छोड्ने, rejection भनेको आफूबाट हटाइदिने, इन्कार गर्दिने. Okay, so the child has that dominant anxiety. Yes, Bruno says. Next one, here, see here, mother has different symbols in this story. When you look at the mother, yeah, the stepmother, हामीले stepmotherलाई हेर्यो भने यसलाई फरक तरिकाले एनालाइसिस गरेको छ. The one mother at home, see there, and another just symbol of the gingerbread house, जुन घर छ, घरमा गएर नि खान्छ उनीहरूले घरलाई. यसो न, they were at first very hungry हुन्छ. When they find the house, they start eating and breaking and eating the house.
and similarly one mother is at home, हैन? So यहाँ के भन्छ the mother represents the source of all food to children, भनेको बच्चाको लागि आमा भनेको खाना हो, के हो, स्रोत हो रे। yes or no? जस्तै what happens, they stay with their parents, अब आमा हुनुहुन्छ घरमा, yes, and they were left in the forest, then again they come back, फर्केर आउँछ। आमा वा बुवाको सहारा चाहिन्छ भने बच्चालाई भने त्यो पनि एउटा देखाएको छ, yes or no? अनि अर्को, when they were left in the forest, what happened, they followed a snow white bird and they came to a house, त्यो हाउस पनि हेर, हाउस पनि एक बारको मदर नै हो रे। Yes, Bruno ले के भन्छ भने when one mother leaves you, then there is the other mother who will serve you. Yes, so mother को यहाँ फरक तरिकाले एनालाइसिस गरिएको छ। And similarly people symbolize justice. सुरुमा चाहिँ जब उलाई आमा बुवाको कुरा सुन्छ नि उले, हैन, ह्यान्सलले ग्रेटेल रुन थाल्छ, and Hansel goes out at night and he collected some pebbles, yes or no? He collects some pebbles and fills his pocket with pebbles, अनि जान्छ बाटोमा खसाल्दै जान्छ। So this was what justice, वास्तवमा के हो त, यो pebbles ले एउटा न्याय दिनुपर्छ, कसैलाई अन्याय भएको छ भने त्यसलाई न्याय दिनुपर्छ, किनभने उले एउटा बाटो देखाउँछ pebbles ले, yes or no, at first. So this is another interpretation. Next one, बच्चा घरमा आउँछ, फर्केर आउँछ। So यो बच्चा फर्केर आउनु भन्ने के देखाउँछ भने they need parents, yes or no? Because children are not independent, they have to depend on parents, and they have to learn something, they have to get something from their parents, they can't do anything themselves, आफैले केही गर्न सक्दैन। So this shows that बच्चा घर फर्केर आउनु भनेको के देखाउँछ त, they need parents, उनीहरुलाई आमा बुवा चाहिन्छ भन्ने देखाउँछ। In the same way, see, regression and denial reduce one's ability to solve problems. See, when you think of regression यहाँ स्टोरीमा कहाँ छ भने, जस्तै when you see Hansel ले सुरुमा जुन टेक्निक अपनाउँछ नि, त्यही टेक्निक नेक्स्ट टाइम पनि अपनाउनु खोज्छ, remember, okay? जस्तै at first he collected pebbles. Next time also he wanted to go to collect the pebbles, but he was not able to do that. त्यो गर्ने चाहिँ सक्षम हुँदैन त्यो, किनभने ढोका लगाइएको हुन्छ। Yes, अनि जब when you turn back, when you follow the same acts what we did in the past, we may fall into difficulties, we may be in problems, है, हामी समस्यामा हुन सक्छौं भनेर देखाएको छ रिग्रेसन भयो भने, है। जसले ह्यान्सलले के गर्छ त, त्यहाँ समस्या भोग्छ, ओके? त्यसै गरेर and reduce one's ability to solve problems, भनेको जब हामी पछाडीका कुराहरु मात्रै सोच्छौं, अगाडितिर अग्रगमनतिर जाँदैनौं, यस, हामीले के हुन्छ, सोच्ने शक्ति नै कम हुन्छ रे, we will face difficulties and problems. So Hansel used his intelligence, सुरुमा चाहिँ ह्यान्सलले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्छ, हैन, नयाँ कुरा केही गर्छ नि त, pebbles collect गर्ने, but later on what he did, he didn't use it, है, पछि चाहिँ गएर उले प्रयोग गर्दैन। So he faced problem. So Bruno says that हामीले रिग्रेसन हुनु वा पछाडी फर्केर हेर्नु वा पछाडीकै कामलाई निरन्तरता दिनु भनेको that is not the solutions, that as problems in our future. So we have to always be forward looking, हामी जहिले पनि के हुनुपर्छ त, forward looking हुनुपर्छ, innovative हुनुपर्छ। Next one, denial and rejection makes a man lose initiative and ability to think clearly. जुन कुरा यो अगाडिकै कुरासँग रिलेटेड छ, है, हामीले छोड्दियो भने बच्चाहरु जस्तै बच्चाहरुलाई छोड्दिन्छ सुरुमा, उले सोच्ने क्षमता नै हुँदैन के त्यसमा, के सोच्ने, कसरी नयाँ कुरा कसरी ल्याउने, यसर्न sometimes what happens, we may lose initiative means to do anything, yes, or to trigger something, and we may lose our ability to think clearly, yes, यस्तो अवस्था भयो भने हामी केही समस्या आइसकेपछि त्यो समस्या सुरुमा चाहिँ त्यो समस्याले हामीलाई सोच्न पनि दिदैन, के गरौँ कस्तो हुन्छ, स्टेट अफ कन्फ्युजन or dilemma, okay, त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ, we can't think, okay? ल तिमीहरुले सारे हो, हेलो सारे सर, सारे छ है। अब नेक्स्ट मा जाउँ त, केही प्रब्लम छ यसमा? These are different symbols, yes, used in Hansel and Gretel, जुन ब्रुनो बेटलहमले साइकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू बाट कसको दिमागमा के होला, कस्तो केले के भन्छ भन्ने देखाइरहेछ। ओके, shall I move ahead? Yes, कोही बोल्दैन त कसैले? Yes sir, yes sir. Good, so I'll move ahead, है। Next,
यहाँ हेर त जुन माथिको पोइन्टबाट जाँदै गर्छु है ओके a child becomes independent through meeting the world yes this is very nice point yes or no a child becomes independent एउटा बच्चा के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जब यो संसारमा आउँछ संसारका they face different difficulties different problems yes when they face problems and difficulties what they learn and when they learn slowly they become independent है बिस्तारै के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जान्छ okay a child becomes second point is there's the point of the bread also bread shows the limiting effects of fixation to primitive levels of development भनेपछि हामीलाई खाना चाहिन्छ कुन अवस्थामा त हामीले सानो हुँदाखेरि हामीलाई खाना चाहिन्छ त खानाको लागि विकासको लागि चाहिन्छ रे bread here shows the food okay and bread shows the limiting effects of fixation to primitive levels of development at first what happens when you have when you need food when you eat food then you will grow and will you grow your mental condition will slowly grow up है मेन्टल कन्डिसन पनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो डेभलप हुँदै जान्छ सो ब्रेड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन हामीलाई जुन स्टोरीमा के गरिएको छ ह्यान्सल एन्ड ग्रेटललाई ब्रेड दिएको छ ओके पोइन्ट नम्बर 3 इज अ चाइल्ड मस्ट ओभरकम इज विन डिस्ट्रक्टिभ डिजायर्स है कुनै पनि इच्छा हुन्छ हामीले विध्वंसकारी जुन इच्छाहरू हुन्छ नि त्यो इच्छाहरूलाई एउटा बच्चाले के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अ जित्नुपर्छ रे otherwise his parents or society will force them to do so as mother did है जस्तै बच्चाहरूले जस्तै सोच्नु पर्थ्यो उले खानाको प्रब्लम छ त्यहाँ सो व्हाट टु डू के गर्ने हैन खानाको प्रब्लम छ त्यो खानाको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो यस त्यो के प्रब्लम हुन्छ अब के हुन्छ भने जस्तै मदरले उनीहरुलाई के गर्दैन छोड्दिन्छन् जंगलमा कि तिमी आऊ आफै सिक जाऊ आफै सिक अब कोही आफैले सिक्यो भने त राम्रो आफैले गर भने त इट्स ओके उले आफैले नै बच्चाहरुले सोचेर मैले यसो गरे भए हुन्थ्यो यसो गरे भए हुन्थ्यो यसो गर्दियो हुन्छ भनेर भएको भए मदर वुडन्ट ह्याभ फोर्स्ड देम टु लिभ यस अर नो इन द फरेस्ट तर उनीहरुले बच्चाहरुले त्यो नगरिसकेपछि के भयो आमाले फोर्स गर्नु ओके जाऊ यस सो नेक्स्ट वान here oral greediness causes a man suffer from difficulties they were lured by the witch see here when the children went to the the witches yes जुन witch को घरमा जान्छ नि है उले खान थाल्छ भोक हुन्छ उलाई यस अनि त्यसपछि witch चाहिँ कस्तो मिठो आवाजमा मिठो स्वरले नानी बाबुहरु आऊ भित्र आऊ यस जान्छ अनि त्यसपछि मिठो मिठो कुरा गरेर मिठो मिठो खाना खुवाउँछ यस आर नो दैट इज ओरल ग्रीडनेस कसैले मिठो मिठो कुरा गर्दै फकाउँदै हामीले फक्यो भने what happens we fall in difficulties we fall in problems so the same thing happened to Hansel and Gretel हेर मक्का परेर कुरा गर्दियो हैन भोलिपल्ट हेर्दा त के हो त बोक्सी परेछ and their troubles or difficulties started त्यहाँबाट के हुन्छ troubles and difficulty सुरु भइहाल्छ ओके सो कसैले हामीलाई अलिकति मिठो कुरा गर्दैमा हैन फकायो भने हामीले फकिनु भन्दा पनि we have to think about that जुन इगोको कुरा गर्यो नि यस इगोको त्यो कुरा हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ यो ठीक हो कि होइन भनेर एउटा मनले भन्छ ओरल ग्रीडीनेसले त्यो अट्र्याक्ट हुन्छ दैट इज ईद हामीले ईदको कुरा गर्यो अघि यसर न भित्रतिर मनले ए खाइदु खान्छ यसर न सो गरौँ यो प्लेजरको कुरा हो खाइसकेपछि हामी के हुन्छ हाम्रो भोक मेट्छ खुसी हुन्छ कति खुसी हुन्छ ती बच्चाहरु यसर न बट देयर इज समथिङ हिडन इनसाइड इट ओके नेक्स्ट वान जिन्जर ब्रेड हाउस जुन घर हुन्छ नि त्यो ब्रेडले बनेको सुगरले बनेको यसर नो that house actually represents the mother's body त्यो आमाको शरीर हो रे है त्यो जिन्जर ब्रेड हाउस किनभने जसरी आमाले बच्चालाई दूध खुवाउँछ नि त्यसै गरी त्यो घरले पनि के हुन्छ दूध खुवाएको छ वा खाना खुवाएको छ बच्चालाई सो जिन्जर ब्रेड हाउस इज मदर्स बडी दैट मीन्स सेकेन्ड प्यारेन्ट हो है सेकेन्ड मदर हो दोस्रो मदर हो एउटा मदरले हामीलाई छोडेपछि अर्को मदरले त्यहाँ सहयोग गरिरहनु हुन्छ इट मीन्स a mother may have different different forms she can be present at different places in different forms different form मा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सक्नुहुन्छ रे मदरले next one the house stands in the subconscious for the good mother त्यो घर जुन हुन्छ नि घर चाहिँ के हुन्छ सबकन्सियसमा बच्चाको हुन्छ
who offers her body as a source of nourishment. जुन घरको कुरा गरेर बोक्सीको घर हुन्छ नि त्यो घर. It is the original all-giving mother when his own mother begins to impose restrictions. जब आफ्नै आमाले हामीलाई विभिन्न restriction दिन थाल्नुहुन्छ यसो त्यसो हैन. त्यसपछि there is also another mother. Yes or no? बच्चाको लागि के हुन्छ मदर हुनुहुन्छ. आफ्नै मदरले विभिन्न खालको restriction दिन थाल्नु भयो भने there is also one mother. Yes, whom you understand or whom you realize or not, but there is all loving, all giving mother, original mother. Yes or no? Who doesn't leave us? Hey, who doesn't leave her children? आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न. So one mother is the stepmother, and another mother, yes, the body of the mother is shown by or represented by the gingerbread house, है त्यो घरको. Similarly, the witch is our boxy भनेको हेर. The witch is a personification of destructive aspects of orality. है यो witch भनेको के हो भने उले चाहिँ मिठो मिठो कुरा गरेर हैन बच्चालाई फकाउँछ. कसैले फकाउँदाखेरि के that is the destructive aspect of orality. Remember. त्यसलाई चाहिँ पर्सनिफिकेसन भने मान्छेको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ the witch लाई. कसैले फकाउँछ मिठो मिठो कुरा गर्छ. मिठो मिठो कुरा गरेर के गर्छ त हामीलाई विभिन्न लोभ लालसाहरू देखाएर हामीलाई समस्यामा पार्दिन्छ. That is the witch. The children learn little experience and self control at the witch. बच्चाहरू त्यहाँ एउटा रियल सिचुएसन रियल वर्ल्डसँग फेस गर्छ. त्यसले एक्सपिरियन्स पाउँछ. And the punish of witch is as justified as children's rescue. हामी सिक्दै गयौं संसारसँग जुझ्दै गइसकेपछि one day comes, yes, we become quite confident, self confident, and we become independent. Okay, हामी चाहिँ के हुन्छौं independent हुन्छौं. जुन बोक्सीलाई मारेको भने पनिश गरेको देखाइएको छ त्यो बच्चाहरुको रेस्क्यू भन्ने देखाइएको छ, उद्धार भन्ने देखाइएको छ. Okay, in the same way, next point, a man must develop initiative and realize the course lies in intelligent pre-planning and acting. See here, हामी मान्छेले के गर्नुपर्छ भने कुनै नयाँ कुराको खोज गर्नुपर्छ रे, इनिशिएट नयाँ कुरा सुरु गर्नुपर्छ रे. And we have to understand our situation. हामीले वरिपरिका सिचुएसन पनि बुझ्नुपर्छ. Yes, जस्तै Hansel, when you think of Hansel and Gretel, Gretel how she understand the situation. When you think of Hansel, how Hansel uses his mind, yes, how uses his intelligence, and how Gretel uses her intelligence. है जस्तै बोक्सीले उलाई चाहिँ ह्यान्सललाई लकअपमा लक गरिदिया हुन्छ हैन सेडमा है. अब गर्दाखेरि उले के हुन्छ औँला निकाल भन्छ. औँला निकाल्नको सट्टामा उले के निकाल्दिन्छ त बोन निकाल्दिन्छ. That is intelligent pre-planning. हेर, yes, intelligent acting. In the same way, Gretelले जब बोक्सीलाई चाहिँ जाऊ त्यो छामा ओभन के छ भनेर भन्छ, त्यसपछि उले के भन्छ मलाई त आउँदैन सिकाइदिनुस् भन्छ. That is also intelligent planning. Yes, so हामीले त्यस्ता intelligent pre-planning गर्नुपर्छ रे. Then here the example is substitution of the bone for the finger, tricking the witch to climb into the oven. Yes, so this so that we have to use intelligent pre-planning. Okay, अर्को point यसैमा भएछ. The recognized dangers make a man able to find a way to a higher stage of development. अब के हुन्छ recognized danger भनेको चिनिएको खतराहरू जुन बोक्सी के हुन्छ चिनिएको खतरा हुन्छ. कसको लागि त ग्रेटेलको लागि, and both and Hansel also, है, both of them. So यसरी चाहिँ उनीहरुले के हो त्यो डेन्जर हामीले देख्यौ भने हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्न, हामीलाई केही कुरा नयाँ कुरा गर्नको लागि हामीलाई इन्साइट गरिरा हुन्छ. So but if you don't know the dangers, if you don't know the problems, त्यो कुराहरुमा हामी त्यति ध्यान दिदैनौ, yeah, we will not go to the higher stage of development, है, हामी जाँदैनौ. So what happens, the first and foremost thing is that we have to identify the dangers around us. हाम्रो वरिपरि केही dangers छ भने त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौ भने we can plan. Yes, we can go to the other level of development. Okay, next point here. So what is here? The next one is the children inherit which is jewels. है, बच्चाहरु जब बोक्सीलाई मारिसक्छ नि, बोक्सी मरिसकेपछि ती बच्चाहरु कहाँ जान्छ त बोक्सीको घर भित्र जान्छ. यसले के देखाउँछ? Suggest the children
transcending oral anxiety and freedom for relying on oral satisfaction for securing. This means rediscovering the food parents. Okay, यसरी उले बोक्सीलाई मारेर बोक्सीको घरमा जान्छ, उले जुवल्स बोक्छ, जुवल बोकेपछि टाइप अफ they are now free. This also symbolizes that they are independent now. They can do something. They can earn something. They have got experience. They can live their life themselves. They are now free. Okay? जुन ओरल एंजाइटीबाट उले एउटा प्रब्लममा परेको थियो, त्यो भन्दा नि माथि गइसक्यो, त्यो ओरल एंजाइटीलाई उले जितिसक्यो. Okay? So these are, see how these are different points of interpretations yes done by Bruno Bettelheim. है Bruno Bettelheim बाट यसरी पोइन्टहरु दिएको छ. केसमा केही प्रब्लम छ भने भन त सारी सक्यो. Have you copied? Hello. खोइ त कसैले बोले हैन त. सारी सक्या हो. Have you copied? Sir. Good. Any problem? केही छ प्रब्लम? तिमीहरुले घरमा एकचोटी पढ्नु है, पढिसकेपछि अनि जनै कुनै के कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है. Okay, let's move forward. We have very few minutes है. हामीसँग धेरै कम टाइम छ. Okay, so let's see then. We'll move to the next part. अब यसैमा चाहिँ ब्रुनो बेटलहेमले बर्डको बारेमा के गरेछ जस्तै at first some birds ate breadcrumbs on the way है, जुन मैले फर्स्ट बाट इन्डिकेट गर्न खोजे हो. And the second one, what happens when they were there in the forest, they heard the song of a snow white bird. Okay, snow white bird go. And the next one, duckling. These three types of birds. हामीले अब Bruno Bettelheimले के भन्न खोजेको छ, why the birds are kept in the story. त्यो के हो त बर्डले देखाउन खोजेको. अब हेरौँ के भन्छ, the behavior of birds. त्यो चराहरूको बानी बेहोराले के देखाउँछ, the entire adventure was arranged for the children's benefits है. जम्मै के एडभेन्चर, एउटा एडभेन्चर हो. ती जम्मै एडभेन्चर चाहिँ बच्चाहरूकै फाइदाको लागि अरेन्ज गरिएको छ रे स्टोरीमा है. Okay, the dog on the parental home. The dog भनेको pigeon, जुन अर्को little brother little sister मा dog भनिएको छ. Parental home symbolizes superior benevolent powers. जब ऊ ह्यान्सल गइरा हुन्छ, उले फर्किन्छ, फर्किसकेपछि उसको बुवाले चाहिँ किन फर्क्या भन्छन् हैन भन्नुहुन्छ, भन्दाखेरि ऊ मेरो चाहिँ डगले मलाई बाइ बाइ भनिरहेछ, पिजनले मलाई बाइ बाइ भनिरहेछ भनेपछि त्यसले के हुन्छ, एउटा बेनिभोलेन्ट पावर्स देखाउँछ, सुपिरियर बेनिभोलेन्ट पावर्स, परोपकारी शक्ति है. And the snow white bird helps them to find the right place for them to arrive है, जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याइदिन्छ स्नो व्हाइट बर्डले. And the white dog है, सेतो डगले helps them to reach to the safety, सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो घरमा पुर्याइदिन्छ उनीहरूलाई. Okay, so dog is a sign of fidelity and of freedom from worry है. Fidelity भनेको loyalty, जुन हामी कसैमाथि विश्वास गर्छौं हैन. Okay, and then freedom, that is also freedom. त्यो big body of water cross गर्छ, cross गरेपछि that is they get freedom. त्यसले सिम्बलाइज गर्छ कि फ्रीडम तिर लगेको छ भनेर. Okay, so next one, the birds offer them a clue to the path the children must follow to gain their reward. चराले के गरेछ भने उसको रिवार्ड त छ, भविष्यमा उले सिक्नु पर्नेछ, रियल लाइफमा प्रवेश गर्नु पर्नेछ यिनीहरुले. Yeah, they have to learn something, they have to experience something. So चराहरुले के गरेछ, बाटोमा क्लू भनेर, हिन्ट भनेर दिइराछ कि जाऊ यही बाटो जाऊ, यसरी यसरी जाऊ, यसरी यसरी जाऊ. So you will now see the real world. Yes or no? Yes, and you will learn something. You will get freedom. भनेर देखाइएको छ. In the same way, see, crossing, they cross the big body of water. What does that mean? त्यो भनेको चाहिँ के हो? Crossing water body shows transition and a new beginning on a higher level of experience. जब तिनीहरु दगुर्दै जान्छ, they come across a big body of water. The big body of water लाई के गर्छ त उनीहरुले क्रस गर्छ with the help